Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Shabazz from NED Alumni Association of Australia. Today we have our guest engineer Asad Khan. He is the head of business unit for Siemens Australia, and he lives in Melbourne. So today he's going to tell us about the different trends and opportunities in energy market of Australia. And let's start our interview with Asad Khan. Thank you so much, Asad Khan, for joining us. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम शहबाज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो ये इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में अंडर द बैनर ऑफ एनएडी अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जो आप लोग काम कर रहे हैं काफ़ी लोग, वो काफ़ी कमेंडेबल है। और थैंक यू सो मच कि आप अपना वक्त निकाल रहे हैं इस तरह के शोज करने के लिए। within I think the intention is to help young engineers who are in Australia or outside of Australia, उनको कुछ guidance मिले। So I'm very happy to be part of the show and thank you for having me. Okay, so thank you so much, Asad, for that. Please provide a brief introduction of yourself regarding your career, where you up to, what is your experience, and things like that, so that we can know a little bit about yourself. No problem, no problem. I'll definitely provide it. और मैं थोड़ा सा I would like, although we can do this in English as well, but I would like कि थोड़ा सा mix रखें ताकि सब लोगों को बेहतर समझ आ सके, obviously. So I am a graduate from NED, as you already know. 2003 मैं pass out हुआ। 98 99 मेरा बैच था NED से, इलेक्ट्रिकल में मैंने इंजीनियरिंग की। एंड ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के बाद एट दैट टाइम, और शायद अभी भी, आई थिंक सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो एनईडी से निकलते थे पाकिस्तान में, उनका एक ड्रीम होता था सीमेंस को ज्वाइन करना। और सीमेंस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी थी उस वक्त, मैं कहूँगा। तो आई वाज लकी, आई जॉइंड सीमेंस इन 2003, और उसके बाद एक लंबा सफर है सीमेंस के साथ मेरा। और अब मुझे तकरीबन 18 साल सीमेंस के साथ हो चुके हैं काम करते हुए in the field of, I would say my specialization is the field of power transmission distribution, specifically distribution। और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो medium voltage switch gears, low voltage switch gears and all the aspects of distribution networks, to be honest। मैंने सीमेंस के साथ ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज में काम किया है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली काम किया, उसके बाद आई वाज लकी टू गो टू जर्मनी फॉर कपल ऑफ इयर्स वर्किंग फॉर सीमेंस इन जर्मनी। फिर मेरा एक काफी लंबा करियर स्पैन है जो मैंने मिडल ईस्ट में गुजारा है, अबू धाबी, दुबई में, यूएई के अंदर सीमेंस के साथ। एंड इन 2015 फाइनली वी माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, and again I was quite lucky to join Siemens in Australia in 2015, and since then I'm working with them in different areas: project management, business development, and currently, as you rightly said, I'm actually responsible for complete tendering and business development for a business unit which is called distribution systems। हम आगे जाके थोड़ी इस पे बात भी करेंगे कि ये क्या है और इसका काम क्या है। So that's a bit of a, it's very difficult कि 18 सालों को 5 मिनट में कवर किया जाए, लेकिन I've tried my best to give a small introduction। That was quick, but we had an idea. Like obviously, you have achieved a lot in those 18 years, and thank you so much for that. So let's take our first question. My first question is, what is exactly power distribution for someone who doesn't know about that domain? So हाँ, ये for a बड़ा, that's a, layman, हाँ हाँ हाँ, yeah. ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेसिफिकली आज हम थोड़ी सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, और हम थोड़ी सी भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस स्पेस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, people who are in Australia in this market, or people who are in Pakistan, young engineers who are still in studying maybe in their uni, to understand what is the power distribution market like here, and we'll talk about that। So coming to, देखो, बहुत ही ज्यादा अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर, it's about getting power to consumers। okay, so हमने सबने सुना हुआ है कि there is a power transmission जहां से जनरेशन होती है पावर की पावर प्लांट से, but when it comes to distributing power, so distribution लफ्ज ही बता रहा है कि it's distributing powers to consumers। हमारे और आपके घरों में जो पावर आ रही है, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो वाईफाई कनेक्ट हुआ हुआ है, इस सब के लिए आपको पावर की जरूरत है। And the whole process of bringing the power from transmission to the consumers through different distribution networks,
Basically, this is what power distribution is all about, you know. The second thing is that power distribution के अंदर we can categorize it into primary and secondary. So primary power is when it's normally on high voltages, and generally up to 36 kV, depending upon which countries you are. And then there's a secondary level, which is like 230 volts, 230 volts, 110 volts, you know, depending upon which country. So different countries have different standards, single phase, three phase. But as a concept, अगर हम इसको समझें तो yes, it's basically bringing the power to the consumers. घरों में power लाने का जो पूरा process है, वो power distribution है. और उसके पीछे obviously there are a lot of components which are involved, different types of networks which are involved. और yes, और अब ये market काफी change हो रही है from the conventional power distribution, क्योंकि किसी के लिए समझने के लिए ये है कि historically कुछ लोग पावर जनरेट करते थे और वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब डायनामिक्स इस मार्केट के बहुत चेंज हो रहे हैं. हम आगे थोड़ी सी इस बारे में बात करेंगे कि अब हम बात कर रहे हैं कि हर किसी के घर पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. इसका मतलब है कंज्यूमर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इसके क्या डायनामिक्स हैं ये भी हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे. बट यस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली सिंपल अल्फाज में यही है जो मैंने आपको समझाया. Okay. So our next question is, what are the emerging trends in the energy market of Australia from your point of view? हाँ, ये बहुत अगेन दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, एंड इस पे हम थोड़ा सा आई वुड लाइक टू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक इन दैट. If you need to understand कि what are the current trends in energy market, so there we call it the 3Ds. Okay, so ये 3Ds कौन से हैं? The 3Ds are decarbonization, decentralization और digitalization. अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि what is the detail of these 3Ds, you know. So decarbonization, जैसा कि लव से काफी लोगों को पता चल रहा है कि to remove to actually improve or to remove our carbon footprint, you know, it's a global challenge at the moment to reduce carbon footprint. और काफी ज्यादा जो काम हो रहा है एनर्जी के अंदर वो इस वक्त डीकार्बनाइजेशन के अंदर हो रहा है. अब अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेसिकली renewables, yeah, solar and wind power plants, these are all being put into place basically in that aspect. Electric vehicles, we are talking about a lot of electric vehicles which would be definitely in the next 5 years you will see become the future of automotive industry. और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो होल कॉन्सेप्ट है वो डीकार्बनाइजेशन के ऊपर है, to remove the use of actually conventional fuel, because when fuel burns it actually increases your carbon footprint. Second thing, आप अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं फॉसिल पावर प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि कोल पावर प्लांट्स. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी ड्राइव है कि काफी ज्यादा कोल पावर प्लांट्स को शट डाउन किया जा रहा है. और ये सारे जो चीजें हैं ये बेसिकली दीज आर हैपनिंग टू एक्चुअली in that decarbonization process of energy. The second thing is decentralization. अब decentralization की अगर हम बात करें तो decentralization का मतलब ये है कि जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले भी बोल रहा था कि नॉर्मली ये होता था कि आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि आप बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पावर प्लांट सेटअप करें. यू सेटअप अ लॉट ऑफ छोटे पावर प्लांट्स, या फिर फॉर एग्जांपल हर घर के अंदर सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं. तो अब क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है वो ग्रिड को एनर्जी सप्लाई कर रहा है. सो बेसिकली यू आर डिसेंट्रलाइजिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, जिसमें पहले हिस्टोरिकली सिर्फ जनरेशन से यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता था, अब बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है. So this also helps the overall efficiency of energy. The third thing is digitalization. Ab digitalization, again, the whole world is moving through digitalization. Ab digitalization का concept basically ये है कि use of tools, softwares, systems which actually automates how your machines work, how humans interact with the machine, data analysis किया जाए, efficiency बढ़ाने के लिए. इसके अंदर सबसे इसको बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी का नाम देते हैं मार्केट के अंदर उसको कहते हैं एनर्जी 4.0. अब एनर्जी 4.0 बेसिकली इट्स अ नेम जहां पर आप ऐसे प्रोसेसेस और सिस्टम्स इंप्लीमेंट करते हो. लेट्स से कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आप गाड़ियां बना रहे हो या आप कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हिस्टोरिकली वहां पर बहुत सारे लोग, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग देयर.
but the whole idea of energy 4.0 is कि आप ऐसे सिस्टमैटिक इंप्लीमेंट करो कि आपकी ह्यूमन पे जो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो, और सॉफ्टवेयर्स आपको बता सकें कि यार क्या प्रॉब्लम आने वाला है सिस्टम के अंदर, डेटा एनालिटिक्स कर सकें. सो डिजिटलाइजेशन इज अ बिग बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन. प्लस अगर मैं थोड़ी सी स्पेसिफिक बात करूं, लेट्स से इफ यू टॉकिंग अबाउट पावर इक्विपमेंट, सो आप हिस्टोरिकली स्विच गेयर या सब स्टेशन इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, मोटर्स, जनरेटर्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म द पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपने एक दफा इस सिस्टम में लगा दिया, but you forget about it, what's happening on that. So right now we are doing a lot of work जिसके अंदर आप you put sensors on the transformers which give you real time data कि actually transformer का heat load कितना है, उसके अंदर vibration कितनी है. So basically based on that, an operator sitting in remote areas can actually see this data on his laptop and actually preempt any faults which may be coming in the system. Because आपको ये बात हम सबको पता है, हम सब पाकिस्तान से हैं, हम सब ने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा है. पाकिस्तान में क्या होता था, ज्यादा बारिश हो गई लाइट चली गई, ज्यादा दरख्त गिर गया लाइन पे लाइट चली गई, हमने कहा पीएमटी फट गया. ये सब चीजें हमने अपने बचपन में देखी हुई है. लाइट आई नहीं रही, केईसी वालों का इंतजार कर रहे हैं कि लाइट नहीं आ रही. सो बेसिकली फॉल्ट्स को प्रीएम्प्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, अगर हम उसको एलिमिनेट कर सकें, पहले से ही उसके बारे में हम पता लगा सकें, so it will actually improve the efficiency of the power distribution network. So that's digitalization. So yes, going back to sum it up, आपका जो क्वेश्चन था, 3 एरियाज हैं मेनली. जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग नए इंजीनियर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी आने, और ये ग्लोबल चीज है, दिस इज नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया. Decarbonization, decentralization and digitalization. These are the 3 key emerging trends in the energy market for the next 5 to 10 years. Okay. My next question is, what are the product and services that drive the growth in energy market? So in what sector, if we have like a lot of construction, obviously we need more energy, but on the other hand, we are making the building more smarter as well. So it means there is an overall reduction in the energy consumption. So what are the driving factors of the energy market from your point of view? So if we have like increment in those areas, and it can like give a boost to the energy market. हाँ, बिल्कुल. अब देखो, if I talk about the products and services, that was your first point. Again, if you talk about distribution market, we are talking about some key components in distribution market. Okay. So conventionally, we are talking about distribution equipment such as medium voltage switch gears, transformers, low voltage switch gears, and then other equipment which actually distributes power to consumers. Yeah. But ये कन्वेंशनल वे ऑफ मेथोडोलॉजी था कि आपके पास एक सब स्टेशन होता था, you actually had equipment in there and you actually distributed power to the consumers. But things are changing. Okay, things are changing. And यहाँ मैं ये बहुत important एक बात बताऊं कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया आए and they want to work, and for that matter anywhere they want to go, and as an electrical engineer they need to work, they need to look out for products like electric vehicle charging. Like I said, electric vehicle charging is going to be one major, I would say, the dynamics of this product portfolio will change dramatically in the next 5-10 years. This market is very small at the moment. Electric vehicle charging market, abhi aapko pata hai, bahut sare car manufacturers, they are coming out with electric vehicles. When all these cars will come on the road, they need actually charging points. Okay, so people need to charge their cars. Right now, the charging infrastructure is not that great. It's developing, but it's a great opportunity for someone who wants to actually be in the market. For maybe, अगर किसी को लगता है कि कहाँ पे मैं एक्सेल कर सकता हूँ या कहाँ पे मैं एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ मार्केट के अंदर. Obviously, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि so they get a stable job. I think that's one of the areas where you really need to work on. If you are from electrical background, you need to enhance your knowledge in electrical charging portfolio. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, battery energy solutions. So now with renewables, when we talk about renewables industry, renewable का क्या process है? Renewable का process है to create energy from alternate resources. So आप कोई गैस या कोई कोल या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चला रहे, आप सोलर और विंड या वाटर से आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो.
So basically, right now, the biggest challenge is आपके अपने घर में देख लो कि basically, if you have solar panels on your roof, on your house, basically you can actually generate solar during your day and consume it, but you can't store it. You know, for storage, you need a separate battery. So now the shift in the market is इस वक्त हम एक काफी बड़ा project कर रहे हैं, which is the biggest solar project of Australia, which is called Victoria Best Power Plant. It has almost 300 megawatts capacity. So battery energy storage की जो अपनी product portfolio है वो बहुत ज़्यादा strong है. So you know, so how the batteries work, because batteries are generally sourced by third party suppliers, how they integrate with the system. So this would be my second advice to young engineers and young people. Okay, after electric vehicle charging portfolio, focus on battery solutions, because that is these also a very, very growing market in Australia and worldwide. And renewables के point of view से, I think Australia is a very, very good place to be in, because Australia के अंदर sunlight भी बहुत है, wind भी बहुत है. You know, so Australia is a very, very attractive place for, and आप देख रहे इतना काम हो रहा है इस वक्त renewables के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, and they have a great commitment. साउथ ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें, साउथ ऑस्ट्रेलिया इस वक्त लास्ट 3-4 महीने पहले there was a day in South Australia where the whole state for 30 minutes ran on renewable power. So they actually took no power from the conventional power plants. And South Australia का vision ये है कि I think they want to achieve 95-100% renewable, कि वो पूरी state renewable से चलाएंगे. And this is going to follow in other states as well. So yes, these for me would be the two. देखो conventional चीजें जो power distribution के अंदर सब लोग को जानते हैं, transformer हो गए, switch gears हो गए, distribution boards हो गए, ये सबको पता है, ठीक है. लेकिन अगर आपने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है दूसरों से, अगर आपने अपनी कोई ऐसा चीज करनी है कि नहीं कि मैं ऐसा कुछ स्किल सेट बनाऊं जिससे मैं डिफरेंशिएट हूं और मैं इन डिमांड हूं, so I would then recommend from my side, look, I'm not an expert, but I am in the industry, so I know what's happening. I can tell you that electric vehicle charging and battery energy solutions, or for that matter, renewable, the knowledge of all renewables energy is very important, and it will really help you to develop. All right. So my next question is, what are the major players in the energy market of Australia, where someone need to look for to establish a career? हाँ बिल्कुल. अब ये देखो बहुत अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल and I actually get a lot of messages on my LinkedIn personally as well for people looking for jobs. And तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को मैं इस सवाल को मैं एक्चुअली टू फोल्ड आंसर मैं देना चाहूंगा, ताकि लोगों की थोड़ी हेल्प और गाइडेंस और सपोर्ट भी हो इससे. देखो, एक तो ये है कि कौन से लोग हैं मार्केट में जो कि जिनको जरूरत है लोगों की, who are these companies which are looking for people. But then also as a engineer, maybe as a young engineer, और यहाँ मैं young engineers को बार बार इसलिए थोड़ा सा अपना मुखातिब कर रहा हूँ मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि I think young engineers को direction की जरूरत होती है. They need some direction from us, from people who are established in the industry. So मैं दो चार बातें करूंगा. देखो, सबसे पहले तो if you look who are the people who are looking for skill resources or growth areas, पहले आपने देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं. टू नेम सम, ऑसग्रिड हो गई, एनर्जी क्वींसलैंड हो गई. दीज आर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट who are definitely looking for people. So if you are an electrical engineer, you should be definitely targeting those companies, AusNet, Energy Queensland, Victorian Power. These are all these. So if you go to there's a website called Australian Energy Regulator, AER. So you can Google it and you can go there, and then you will find a list of all these companies who are operating in the space of distribution. Second, जो मेरी core field है, basically I am from manufacturing, ठीक है. Basically Siemens is a big manufacturer. We actually sell products to the market. So we are a manufacturing company. फिर अगर हम इस space में बात करें, so obviously we have the global giants such as Siemens, such as ABB, Schneider, GE. So ये सारी big players हैं जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं distribution के अंदर, coming out with new products and new solutions to the market. थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस से इस सवाल के जवाब में ये भी बताऊंगा शहबाज. आई थिंक आई शुड ऐड देयर कि
जब यहाँ पर people who migrate to Australia, especially engineers, whom I've actually seen in the last 6 years, हमारे पास इस स्किल की कोई कमी नहीं है. You know, we are very skilled. हम talented लोग हैं. हमारे पास experience बहुत ज़्यादा होता है. You know, when people migrate to Australia, they generally have 10-15 years of experience working either in Pakistan or working in the Middle East, for that matter. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि when we come here we don't try to actually sync ourselves to the demands of the market. We think yaar, if we have a lot of experience we will get a job, you know, immediately, and we can approach someone and you know we will be in the market very soon. ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता. आपको सबसे पहला ये सीखना है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट जो है इन प्रिंसिपल इट्स अ स्किल बेस्ड मार्केट. इट्स नॉट अबाउट कि आप मैनेजर थे या आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर थे, आपका स्किल सेट एक्चुअली है क्या बेसिकली मार्केट उस पे. तो यहाँ पर जब जॉब्स आती हैं तो बेसिकली स्किल इंडिपेंडेंट होती है. तो मेरा पहला जो टिप है सब लोगों के लिए who are actually applying for jobs in the market or looking for career opportunities or career growth opportunities, always look ke jo job post ki ja rahi hai, what's the job description, you know, and focus on the job description, because the job description which is being posted will actually tell you ke what sort of a person they are looking for. And when you actually make your cover letter or submit your resume, always try to align your cover letter or resume to the job description which they have actually posted. If you will not do it, then your CV will not actually get to the next stage of selection. Okay, so this is very important. और जो second चीज है, सबसे important चीज है, look, हम सारे लोग अगर engineers हैं, but हमारा काम अब ये नहीं है कि हम अपने घर में बिजली की तारें जोड़ें as an electrical engineer. You know, this is not what we do, because मैं शायद ये कर भी नहीं सकता after almost 18 years. हमारा काम है बेसिकली पीपल मैनेजमेंट. हमारा काम है लोगों को कन्विंस करना, हमारा काम है सॉल्यूशंस लोगों तक लेके जाना. और इन सब चीजों के लिए आपको जो एक चीज की बहुत जरूरत है वो है कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड सोशल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स जिसको हम कहते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर when you're pitching something in the market, when you're going for an interview for example, always try to work on those soft skills, because आधे घंटे के अंदर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज आई ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, इट्स नॉट अबाउट जजिंग समवन ऑन हिज टेक्निकल स्किल्स. यू नो, yes, technical skills are important, but the concept is कि अगर किसी को कुछ टेक्निकल चीज नहीं आती और वो इंजीनियर है तो वो सीख लेगा. You know, they can learn, that's not difficult. But अगर किसी की सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, if he cannot present himself, if he cannot demonstrate his personality well enough, these things you cannot teach anyone. So actually try to work on this. I think there's no problem in our community. लोगों की बात करूं अगर मैं पाकिस्तान से, हम लोग बहुत skillful हैं, but try to work on your soft skills. And yes, these are the major players. Manufacturers में मैंने बता दिया, distribution companies में मैंने बता दिया, who are actively looking for people. Okay, so my next question is, which is industrial segment are key focus for the distribution market in Australia? Yes, okay. शबाज, कोई मैं पहले एक बात पूछना चाहता. Are there any live questions we are planning to take as well? Has someone joined us live, or Yeah, how is it happening? we have quite a few people watching us right now. Okay, so I would would you- also say that if someone has a question, they can also pop in their question, and we will try to take their question as well. Okay, coming to your question, Shabazz. देखो, सब अभी आपने आप we have all seen how the world has changed post COVID. You know, actually COVID-19 is a big game changer in all our careers. Okay, it has actually transformed and shifted the way we used to work, the way the industry was, and the way the future of this industry will be. Not just in power distribution, but for anything. Yeah, if you're anyone, I think the biggest on the back of this, I would recommend 2, 3, 4 key areas if you're in Australia, and I will tell you कौन से मेरे हिसाब से कौन से बहुत active इस वक्त market segments हैं जहां पर opportunities हैं. Number one is data centers. Okay, now why data centers? Because due to COVID, आप और मैं और बहुत सारे millions of Australians, they are working from home, and suddenly the dependency on the infrastructure, IT infrastructure, has significantly increased. How many people are using now Microsoft Teams every day? You know,
So what it means? It means Microsoft needs actually space to actually put all this data, and that's where this data center comes in. People like Google, people like Amazon, people like Microsoft, they are expanding a lot. They're spending a lot in Australia in the data center market. And data center for me is one of the top industry segments going into the future. The next I would say is renewables. Again, I would again mention renewables. So renewable space is definitely one of the biggest market. We have spoken a lot about renewables. So मैं अब ज़्यादा उसकी detail में नहीं जाता. So data centers, renewables. Again, Australia, mining is very important. Now Australia mining is on and off. Right now it's not so much happening in Australian mining, but it will pick up as soon as the world will open a bit. And the fourth I would say is hospitals, the whole IT infrastructure around hospitals, because after COVID we have seen the significance of hospitals. And I think in Australia we were not geared enough properly to handle that pandemic in a way we were supposed to. So hospitals, data centers, renewables, mining, food and water, rail transportation. These are, in my opinion, some of the key areas or key market segments if you are in Australia and looking for opportunities in engineering and electrical engineering and power distribution. Okay, my next question is, what are the key skill sets that are required for people who are looking to get into the energy market, specifically in Australia? Because if you compare that with Pakistan or Middle East, the structure of the grid and everything, the way we generate and distribute is entirely different. So, what are the necessary skill set one must develop in order to get into the job market in energy sector? Again, a very, very good question, Shabazz. Thank you for that. And again, I would like to say that, look, we have touched a little bit on that. Now, when it comes to skill sets, again, we have to differentiate technical degree. So everyone has a degree. We all have a degree in electrical engineering, electronics, manufacturing. We have to separate this from actually the skill set requirement. Now, talking about what I have seen in my 6 years in Australia, Australia is a very, the job market in Australia is very acceptable. For example, even if you don't have a degree, for example, अगर आप पाकिस्तान में job करने जाओ, or if you want to work for Siemens, the prerequisite of that would be you need to have a degree. You need to have an electrical engineer. Otherwise, they will not consider you. Okay. But on Australia, it's not like this. Okay? Australia के अंदर, yes, degree is important, but it's more what you actually do. So आपका skill set क्या है? आप अच्छे project manager हो, आप अच्छे planner हो, आपके पास कोई और ऐसी skill है. So इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जो trend इस वक्त जा रहा है, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, या जो skill set की हमें requirement है, उसके अंदर अगर मैं 3-4 बातें आपसे बोलूँ तो definitely planning and project management is very important. Okay, that skill set is important. But also, if we talk about data, if we talk about data analytics, that is also very important. Now, data analytics in the past, people usually termed this with IT industry. IT industry से link करते हैं data analytics को. But ये चीज अब change हो रही है. वो जो मैंने पहले बात की थी digitalization वाली, वो डिजिटलाइजेशन अगर आपने इंप्लीमेंट करनी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर, सो आपको डेटा एनालिटिक्स वाले लोग चाहिए आपके अपने बिजनेस के अंदर. दे मे नॉट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, but they may be able to see the data and actually tell you what is going on with this data. You don't need an electrical engineer degree for that. ठीक है. जो थर्ड एस्पेक्ट जिसकी मैं अगर बात करूं, obviously if we talk about data centers, so हमें basically all the companies are looking for solution architects. Now, solution architects is basically something जहां पर typically क्या होता था कि customers would give you a requirement and you would provide them a solution. Okay, this is the way business usually works. अगर मैं कुछ बेच रहा हूं, if I'm a manufacturer and you are a customer, you would come to me say कि असद मुझे ये चाहिए, can you deliver? Okay, मैं कहूंगा okay, we can deliver this. Data center की market में ऐसा business model is not working like this. It's more the customer come to you say, this is what I'm thinking. What can you do? This is my concept. What can you do? So to basically convert that concept to reality, you need people who are called maybe solution designers or solution architects.
who can actually interpret that customer requirement into the physical aspects of क्या products होंगी, क्या services होंगी, design कैसा होगा. So this is again in data centers space, that is also a very important skill set. Conventionally, अगर मैं बात करूं, yes, we always are on the lookout for people who know the term, who know medium voltage switch gears, low voltage switch gears, transformers, project management, tendering, engineering of these components. These requirements will always be there. ठीक है. अभी मैं एक बात इसमें और ऐड कर दूं शहबाज. If we talk about switch gears, जिन लोगों को switch gears के बारे में थोड़ा पता है, जिन लोगों को medium voltage terminology के बारे में पता है, they would follow me. Historically, we have been using, for example, a lot of market is using SF6 gas into the switch gears. But अब वो decarbonization और environment के point of view से ये चीज अब आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है, and we are moving to another era of the switch gears which are called clean air या blue GIS या SF6 free. So this is also an important technology which will become very important in the future. So yes, ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. थैंक यू सो मच असद भाई. अब हम थोड़े से कुछ लाइव क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारी हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों से अपने सवाल पूछना चाहते हैं. तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, काइंडली टाइप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट ऑन आवर फेसबुक पेज. मोहम्मद वकास पूछ रहे हैं, कंसीडरिंग शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड हाई डिमांड ऑफ लीडियम in EV industry, what do you suggest to young engineers to see this as an opportunity? हाँ देखो, वकास ने पूछा ये, वकास ने, क्योंकि मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे इसलिए मैं सिर्फ आपकी बात सुन के दे रहा हूँ. ओके वकास, इट्स अ गुड पॉइंट. देखो सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑब्वियसली शॉर्टेज है, आपकी बात सही है, बट इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड. अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्कोप इन द ईवी स्पेस, अगर मैं अंडरस्टैंड, शहबाज यही पूछा है इन्होंने, ईवी के बारे में पूछ रहे हैं ना ये. एक्चुअली अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो इनका कहना है कि वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स and we have a high demand of lithium EV batteries. So we can like balance it using, instead of using semiconductor, we can start making like lithium ion batteries. And how to balance it for an engineer, is it an opportunity? So if we start working on the EV sector, so we need to have we need to require a lot of lithium, which is in. देखो जो बेसिकली लिथियम की जो बात कर रहे हैं वो when we talk about EV is a terminology used for electric vehicles. Okay, so हमें पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो लिथियम की अगर शॉर्टेज है तो people are looking, this is mainly a problem of automotive industry. Okay, it's not really a problem of someone who wants to build a career as an electrical engineer in that space. If there's a shortage of lithium, the automotive industry is looking for alternate means to come up with alternate resources. मेरा जो पहले कहने का मतलब था, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री अगर आपने जाना है, ऑब्वियसली दैट्स नॉट माय फील्ड. मेरी जो फील्ड है, अगर एक ईवी गाड़ी रोड पे आ गई है तो अब उसको आपने चार्ज पॉइंट प्रोवाइड करना है. you have to provide infrastructure for that car to be charged on the road. So आपने उसको एक 160 किलोवाट का चार्जर लगा के देना है. That has nothing to do with shortage of lithium. गाड़ी तो रोड पे आ चुकी है. गाड़ी के अंदर जो भी बैटरी है वो तो है. Now that battery needs to be charged. So what I was talking about earlier is a great opportunity to actually upgrade your skill set in that space of providing that infrastructure. वो कौन सी ऐसी products हैं जो आप मार्केट में ला सकते हो? इस वक्त शहबाज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरल लोग मैं जानता हूं जो अपनी कंपनीज स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. वो क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, चार्जिंग प्रोडक्ट. देखो अगर आप एक टेस्ला खरीदते हो जाके, इस वक्त टेस्ला वाले आपको आपके घर में गैराज में एक चार्जर लगा के देते हैं, ठीक है, लेकिन वो टेस्ला का चार्जर है. वो गाड़ी जरूरी नहीं है कि आपने टेस्ला के चार्जर से ही चार्ज करनी है. अगर आपके पास कोई भी ऑल्टरनेट रेटिंग का चार्जर है, यू कैन चार्ज दैट कार. सो अपॉर्चुनिटी इज इन द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. बिल्कुल वकास का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है और वो ग्लोबल शॉर्टेज है, और अगर लिथियम के अंदर प्रॉब्लम है, so again I'm not from automotive industry, but it's more of a challenge for the automation. If you're an automotive engineer, yes, that might be a challenge for you. But what I do know is that
this will not stop the growth in the EV space. They आज से 5-10 सालों देखो जापान से बड़ा इस वक्त गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है. Japan has actually declared after 2030, which is just in like 9 years, they will stop manufacturing fuel vehicles. They will be only manufacturing electric vehicles. Toyota इस वक्त हर साल तकरीबन 5 न्यू गाड़ियां लेके आ रहा है EV. So this market is going to expand. It's not going to stop due to shortage of lithium. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांजेब अली हमसे पूछ रहे हैं, विच इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कैन बी अकोमोडेटेड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स? जहांजेब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट और थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए ऐसे करूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट इन ऑस्ट्रेलिया. अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑस्ट्रेलिया, और ये मैंने बात पहले की भी है कि पाकिस्तान में अगर आप हो एंड इफ यू वांट टू गो इनटू पावर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट, 99% ऑफ द चांसेस हैं कि आपको वो कहेंगे कि द प्री रिक्विजिट इज टू हैव एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री. ओके, इट्स नॉट लाइक दिस इन ऑस्ट्रेलिया. We have people working with us in Siemens, which is the world's biggest, undoubtedly electrical manufacturing company. We have chemical engineers working for us. We have people from business finance background working in a technical project management role. We have people from, who have a degree in, let's say, as a chef working for us. So, यहाँ पर degree की importance नहीं है. यहाँ पर skill set की importance है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है and you go and you certify yourself as a PMI, as a PMP, project management professional, you can actually apply for a project manager job in Siemens, because the concept of project manager in Australia is the person who actually manages the project. He doesn't need to be a technical expert for everything. He's actually managing a group of people. So yes, अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दैट जॉब और जॉब डिस्क्रिप्शन आप मीट कर रहे हो, डिसिप्लिन डजंट मैटर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सादिक जाफरी पूछ रहे हैं, would like to receive more information on decarbonization strategies and opportunities for engineers in power generation. हाँ, देखो decarbonization पे हमने पहले बात की भी थी. It's one of the main trends, as I already said. Decarbonization, decentralization, digitalization. और decarbonization के अंदर जो two main aspects हैं, मैं again वही बात करूंगा. जहां पर opportunities आपके लिए हैं, वो है renewables space. तो अगर आप अपने आप को सोलर और विंड रिन्यूएबल्स स्पेस के अंदर अपग्रेड करना चाहो, तो दैट्स अ बिग yes. At the moment in Australia there are many jobs coming in all. So if you're a project manager, if you're an engineer, if you're a planner, so in that renewable space a lot of companies, so like अब उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स हो गए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिन्यूएबल मार्केट के लिए, लाइक सीमेंस, लाइक और बड़े प्लेयर्स हैं. लेकिन उसके अंदर आपके वो भी पार्टनर्स हैं, वो लोग हैं जो एक्चुअली ये सोलर रिन्यूएबल पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं. there are a lot of companies who actually set up. There's a lot of French and Spanish companies. बहुत सारे मैं नाम यहाँ पर नहीं ले सकता ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए. हाँ, so and this is not a platform where I'm representing my company. It's on a personal basis. So sorry for that. But जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि manufacturers, yes, but also people who are actually setting up these power plants. There are big players out in the market who are actually looking for these people. Second thing, again, decarbonization में I cannot emphasize on that enough, is that electric vehicles. Yeah, मैं ये समझता हूँ आप ये देखेंगे कि इस वक्त अगले 5 सालों में 60 से 70% गाड़ियां ऑस्ट्रेलियन रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी. आप ये ट्रेंड या आप ये डायनामिक्स आप ये देखेंगे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि हमें पता है कि आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग. दिस मार्केट इज गोइंग टू चेंज. सो अगेन, इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, or if you are for that matter any electronics background or civil background, mechanical background, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो या आपका स्किल सेट ऐसा हो, so please go online and search for what skill set you can create in the space of EV. So understanding the market, understanding the network,
and what you can do to, and these two will actually play a big role in Australia's vision in that decarbonized market in the future. Okay, Asad Naveen आपसे पूछ रहे हैं, considering decentralization of power, what do you think about future of power utilities? देखो पावर यूटिलिटीज का दे विल स्टिल बी अ नीड फॉर पावर यूटिलिटीज, ठीक है. सो इट्स नॉट अबाउट दैट के पावर यूटिलिटीज विल गो आउट ऑफ बिजनेस, because here we are talking about a balance of load. Yeah, so basically the consumers, देखो आप, if you have a consumer 5 kilowatt या 6 kilowatt का अगर आपके पास solar system लगा हुआ है, and you are actually using it, and then what you export back is only the surplus which you generate in a day. You are not exporting everything back to the grid. So the utilities companies does a lot of work apart from just providing power. They provide a lot of other solutions, like they control your metering. They have smart metering solutions which you cannot do as a consumer. They actually bill you, they actually get support from the government, they actually lay the infrastructure. So for example, they actually provide this infrastructure, like the setup substations, grid stations, which you as a consumer will not be able to do, never. They actually put the poles up, they actually put the transmission lines. So there's a lot of other work. It's not just about generating this power. So if the question is that in future there may be a time where maybe and do not forget, the power which you are actually exporting back to the grid is actually coming from the utility in the first place. So if there will be no utilities company operating on this in March, you will not be exporting any power. So there will be a balance. ठीक है, एक ideal situation में they want to create what they call smart grids, where there will be a balance of power, where consumers will also be able to benefit from what they produce and reduce their energy bills, definitely. But utility companies will always be there, and I think their role, and they are also diversifying. They are also going into a lot of other initiatives in the background to actually enhance their services to these customers. So they're also transforming. They're not the conventional companies anymore, but I think they still be there as long as there's a need for electricity. So like you can't live completely off the grid. You need someone to have a centralized power distribution system. Yes, definitely. There needs to be a balance. Yes. Okay, so हमारा अगला क्वेश्चन है, let's take a question. सादिक जाफरी पूछ रहे हैं, what is the advice for young alumni in Pakistan looking to migrate in Australia? फिलहाल तो आप सब मिलके दुआ करें कि पेंडेमिक खत्म हो जाए और लोग यहाँ पर आ सकें. I think that's the biggest challenge. I think first of all तो हमें इस कोविड के पेंडेमिक से बाहर निकलना है. Unfortunately, a lot of people know कि ऑस्ट्रेलिया के जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अराउंड वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. हमारा डिबेट उस पर नहीं है कि whether it's right or wrong. Are people looking to migrate to Australia? Look, again, this is my personal opinion. I'm not an expert in this. I'm not a migration agent. This is my view, how I look at the market. इस वक्त काफी लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं ऑलरेडी, जो बेसिकली जो के स्किल्ड हैं और जो कि माइग्रेट करके ऑलरेडी आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 से 6 सालों में. आई थिंक आफ्टर 2015-16 जब मैं आया था, मैंने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा लोगों में जो आए हैं स्किल सेट. इस वक्त जो लोग आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको, या जो लोग एस्पायर कर रहे हैं आने के लिए, मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि अपना कोई स्पेसिफिक स्किल सेट डेवलप करें. जो हमारी सारी बातें हुई हैं उसको थोड़ी सी ऑब्जर्व करें और अपने आप को प्रिपेयर करें. बिकॉज देखें, अगर आप आज आने के लिए ऑस्ट्रेलिया सोच रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 साल आपको अभी लगेंगे ऑस्ट्रेलिया आने में. सो इस टाइम को जाया ना करें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करें इन द एरियाज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस कॉल. और कोशिश करें कि अब जो नया नॉर्मल हमारे साथ सामने है, बिकॉज व्हाट वी कॉल इज वर्क एनवायरनमेंट, सी अब भी रिमोट वर्क एनवायरनमेंट, कुछ इसकी भी स्किल सेट अपने आप को जनरेट करें. हाउ टू वर्क विद पीपल रिमोटली. अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, और मैं ये सबको रेकमेंड करता हूं, लिंक्डइन लर्निंग पे जाएं, तो लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर काफी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको सिर्फ इस चीज के बारे में प्रिपेयर करेंगे कि हाउ टू वर्क इन द न्यू नॉर्मल रिमोट एनवायरनमेंट. बिकॉज देखो शहबाज, प्रॉब्लम यह है कि हम कन्वेंशनल जिस तरह से काम करते थे, रोजाना ऑफिस जाना, वो अब कभी नहीं होगा.
So big companies have actually moved away from that concept. So अब जो भी लोग काम करेंगे आने वाले दिनों में, they would be mostly working remotely, and working remotely is a challenge, especially for new people who are coming into a company, because अगर आप एक कंपनी को नया ज्वाइन करते हो, so you need to actually create your value, create your value. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीजों पे काम करें, देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पीएचडी कर लें किसी टॉपिक के अंदर या अपने आप को बहुत ज्यादा टेक्निकली सुपीरियर कर लें, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत दफा हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे तो फोकस करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होते। और आई थिंक बहुत ज्यादा जगह आप ये देखोगे कि यही सिंपल चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करेंगी लोगों से। Okay, Vakar, to Ashika, my first question है, what's the current EV uptake rate in Australia and what are next 5-year forecast? आई थिंक वकार हमने काफी इस पे ऑलरेडी बात कर ली है ईवी के टॉपिक को लेकर, और मैंने काफी इस पे अपनी नॉलेज के हिसाब से काफी बात की है। uptake rate, what is the current uptake rate? I don't know about exactly the rate, but what I can tell you, being in the industry, being in as a person who is actively involved in providing solutions and products to this industry, the requirement is just exponentially growing. So every day we are getting new projects defined, government की grants आ रही हैं, बहुत ज्यादा बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है फॉर पब्लिक एंड कमर्शियल बसेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, और आई थिंक नेक्स्ट 5 ईयर की फोरकास्ट जो मेरे हिसाब से, आई डोंट नो द अपटेक रेट, बट आई थिंक यू विल विजिबली सी a lot of growth in this market. All right, thank you so much, Asad. Now we are trying to get in touch with our president, Sadiq Jafri. He will come online and have few words with us. Thank you so much again for your availability. No problem, शहबाज, my pleasure, और बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मुझे आई होप कि लोगों ने भी अगेन कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हाट आई बिलीव आर द राइट एरियाज टू फोकस फॉर पीपल, स्पेशली न्यू पीपल, यंग पीपल। और अगेन बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, और थैंक यू फॉर हैविंग मी। सारिक भाई, मैंने आपको इनविटेशन लिंक सेंड किया, इफ यू आर लिसनिंग, सो कैन यू प्लीज जॉइन अस फॉर 1 or 2 minutes? Let's see if he's online or not. Anyways, I think he's not online. So again, I would like to thank a lot Asad bhai for your time, and obviously as an engineer I learned a lot. मेरा भी इसी फील्ड से ताल्लुक है, मतलब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एनर्जी एनालिटिक्स। So बिल्कुल, और एक और बात शहबाज, जस्ट एज अ क्लोजिंग रिमार्क फ्रॉम माय साइड, मैंने अपने आप को एज अ मेंटोरशिप भी रजिस्टर किया हुआ है अपनी एनईडी एलुमनाई ऑस्ट्रेलिया के पेज पे, और मैं किसी को भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट से रिलेटेड या जनरल गाइडेंस से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया में, और फॉर दैट मैटर हमेशा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि बस मुझे जॉब कैसे मिल सकती है। आई थिंक कुछ और भी चीजें हो सकती हैं जहां आप गाइडेंस लेना चाह रहे हो, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू प्रोवाइड माय नॉलेज, शेयर माय नॉलेज, सपोर्ट यू गाइस। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट हो, सो सेंड मी अ मैसेज ऑन लिंक्डइन और या फिर फेसबुक के थ्रू, and I'll try my best to get back to you, and you guys are doing a great work. Please continue, and thank you so much. All right, Sadiq bhai, can you please connect your mic? Got an error that your mic is not connected. So हमें सादिक भाई ने ज्वाइन किया है, he would like to have few words with us. So sorry, I'm just trying to understand the technology, so can you listen me? Can you hear me? Yes, we can hear you, Sadiq bhai. सादिक भाई, आप जो है अगर आप इसको फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो वहां से आप म्यूट कर दें। Yes, we can hear you, Sadiq bhai. आई थिंक सादिक भाई जो है वो, अगर आप इसको फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो वहां से आप म्यूट कर दें। Okay. सादिक भाई जो है अगर आप इसको फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो वहां से आप म्यूट कर दें। ओके जी, it's better now. Can you hear us now? I can hear you. Can you hear me? Yes, अब better है सादिक भाई, because आप Facebook पे थोड़ा लैग आता है, तो obviously वहां से वो लैग की वजह से आप these technologies are driving us crazy, huh? जी।
if everybody can hear me, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ असद। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला एलुमनाई के लिए। एज यू कैन अप्रिशिएट, वी आर स्टिल यंग। अभी हमने एलुमनाई को इरेक्ट किया है, और उबैद की, जीशान की और शहबाज की, इन लोगों की बहुत खिदमत है। और हमारा मकसद जो है वो यही है, जिसे वो बोलते हैं फारसी में दामे दिरहम सुखन है, कि किसी भी तरीके से हमारे अपने लोगों की, अपनी कम्युनिटी की, स्पेशली जो यंग इंजीनियर्स हैं, उनकी कोई असिस्टेंस हम कर सकें किसी भी तरीके से। अब आपने वो देखा होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है हमने, जिसमें आप भी इनरोल हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और I'm very much delighted. I'm very much delighted to see this session. बहुत अच्छा सेशन था ये, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, बहुत अच्छे सवाल आता है, बहुत अच्छे जवाब दिए गए उनके। एंड आई रियली बिलीव कि हमें और ऐसे सेशंस करने होंगे। दैट्स इम्पेरेटिव कि हम थोड़े से और सेशंस करें, जिसमें आप भी आए, आप जैसे और लोग आए, और दूसरे इंजीनियर्स को जो है वो गाइडेंस फराहम करें। And then we just take this shift from there. So on behalf of all Alumni Association, I really would like to thank you for coming here, for talking to us during your weekend time, and really wish you all the best. थैंक यू सो मच सादिक भाई, एंड एज आई वाज सेइंग शहबाज को भी, कि आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक हम लोगों की एक रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है एज एज सीनियर्स हेयर टू गाइड पीपल, टू एक्चुअली गिव आवर गाइडेंस, और यही हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गेटिंग सम मॉनेटरी एज वो तो सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस पीपल लाइक अस to actually give guidance to people in whatever capacity we can, you know. So if this is a platform we can use, so why not? So बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका, जहांजेब का, उबैद का और शहबाज का, सब लोगों का, और जो लोग भी इसके पीछे काम कर रहे हैं। और मेरी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी, और जब भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। Alright, thank you so much. Over to Shehbaz. Thank you so much, Sadiq Bhai, and again thank you so much, Asad Bhai, for joining us. हम इस आज के सेशन को formally end करते हैं, and I hope everyone learned a lot from you, and we will be having like more session like this in future, inshallah. So just stay in touch, keep connected with the NAT Alumni Network Australia on our Facebook page, on our group, on LinkedIn, and on Twitter as well. We got a YouTube channel, so you can also subscribe for that channel as well. And see you soon again next time. Thank you very much.